In this module, let us learn about the uses of multiple reflection of sound. Uses of multiple reflection of sound. कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्स होगा आप लोगों ने पढ़ा था उसका तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये In this फंक्शन कर module, रहा है. let us learn about the uses of multiple reflection of sound. Uses of multiple reflection of sound. यूजेस देख लो आप लोग कहाँ कहाँ पे. Megaphones or loudhailers. Horns. Musical instruments such as trumpets and shehnais. Are all designed to send sound in a particular direction without spreading it in all directions. ट्रम्पेट जो छोटा वाला सा उसने बोला नहीं ध्यान रख. In these instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from the जैसे source. इसमें जब बोल रहा है कि ट्यूब एक कॉनिकल कह रहा है कि है आप बोलोगे जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में सुनाई देगा. ठीक है साउंड आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा. तो ये बोलता है जिधर भाई इसका अब वो रहेगा फेस आप जिस डायरेक्शन में करके बोलेगा उसी में आवाज जाएगी. चारों तरफ स्प्रेड नहीं करता है. ये चीज बोल रहा है. In the forward direction towards the audience. Stethoscope is a medical instrument used for listening to sounds produced within the body, chiefly in the heart or lungs. In stethoscopes, the sounds of the patient's heartbeat reaches the doctor's ears by multiple reflection of sound. मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है. ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है फिर उसको सुनाई देगा. हो जाएगा. Generally, the ceilings of concert halls, conference halls and cinema halls are curved so that sound after reflection reaches all corners of the hall. Sometimes a curved soundboard may be placed behind the stage so that the sound after reflecting from the soundboard spreads evenly across the width of the hall.